exercise. We have this question in this tabular form, and we need to get the values that should be placed over this blank space. Okay, so this is the problem of arithmetic progression. Here A is initial term, D is your common difference, and A is an term of the AP. Let's solve here. First, we are seeing that this is problem 1, 2, 3, 4, and 5. So first we have initial term as 7, common difference 3, and nth term is 8. So we need to find an. Welcome everyone. Now we need to find for an over here. So let's solve here. We know that an is equal to a plus, if n is there, so n minus 1 will be here, and then d. So initial term is 7, and here an term I need to put here, so n is 8 given here, n is 8, so here 8 minus 1 is 7, and d is here 3, so we have 7 plus 21, that is coming here 28. Very easy, 28. So we can put here 28. Those who are new, please subscribe my channel. Okay, if you like my video, please like it. Now we are going to move ahead. Second, okay, what should be here? So we have initial term is minus 18. We need to find d. N is given 10 and an is 0. N is 0. This one is NCRE problem. You can see over here the same table I have just put it here to do the practice. Let's do it. We have formula an is equal to a plus n minus 1 into d. An is here 0. Initial term is negative 18. Nth term is 10. So 10 minus 1 is 9. D. So we can solve this one here. That is 0 minus 18 plus 9d, and this one is giving us 9d. This 18 will come here, so we have 18, d equal to 18 by 9. So we have d equal to 2. d यहाँ पर 2 हो गया, so 2 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, d की वैल्यू 2 हो गई. एनी प्रॉब्लम? नो. Okay, next, third number. We are going to put third number problem. Third number is initial term is need to find. Initial term पता करना है, तो a, we know that an is equal to third के लिए, this is for third, an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, clear? So n is here minus 5. I'm putting here negative 5. A is, we need to find, a is unknown, a unknown है, and nth term is 18. So यहाँ पे 18 minus 1, then d equal to negative 3. okay, d equal to negative 3 हो गया, ये हो गया minus 5, then a, ये 17. okay, so here plus minus, okay, minus
17 into 3 -5. सो ए ये हो गया 51. ओके, सो ए इज इक्वल टू 51 -5. सो ए इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, 46 आ गया. ए हमारा कितना आया 46. तो 46 हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे. 46 यहाँ पर फिल कर दिया कि मैंने 46 हो गया. ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं. फोर में क्या रखा है, -18.9 इनिशियल टर्म है. तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, फिर से वही फॉर्मूला रख देंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए एन हमारा कितना है यहाँ पर 3.6 और ए नेगेटिव 18.9 और n जो है n फाइंड करना है तो n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है इसमें एपी में जो एन टर्म होता है उस एन टर्म को निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा वेरिएबल और कौन कौन से कांस्टेंट को यूज करके बनाते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली हमको एन निकालना है, nth टर्म निकालना है. उसके लिए फॉर्मूला होता है एन प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन कितना हो गया 3.6, ए 18.9 नेगेटिव, एंड देन n इज इक्वल टू n माइनस 1. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो d की वैल्यू जो है यहाँ पर 2.5 दे रखा है. 2.5 इसको पुट करेंगे और ये टर्म इधर आ जाएगा. 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 और d जो है यहाँ पर 2.5 है. 2.5 तो ये हो गया, वी कैन राइट 25 2.5 n माइनस 1. अब इसको तो ऐड करना होगा, तो ये हो गया 9 6 15, 9 6 15 और 8 3 11 1 12 1 1 2. ठीक है, 8 6 15, 8 3 11 12 हाथ में 1 1 1 2, ये हो गया. सो अब जो है n माइनस 1 के लिए इतना डिवाइड बाई 22.5 डिवाइड बाई 2.5, 22.5 डिवाइड बाई 2.5. तो क्या इसका रिजल्ट बनता है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. n माइनस 1 ओके 225 पॉइंट कैंसिल, सो वी हैव दिस. पंचों के 20 50 25 50 25 5 45 9. So n minus 1 is coming here 9. So n equal to 9 plus 1 on the last, n equal to 10. तो 10 आ गया. ठीक है, n equal to 10 आ गया. टेन हमारा इसका आंसर है, राइट. तो यहाँ पर हम 10 यहाँ पर फिलअप कर देंगे. 10 इस तरह से 10 यहाँ फिलअप हो जाएगा. अब ये लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगा उसको सॉल्व करेंगे. जो है 3.50 है ना, 105 एंड ये ब्लैंक स्पेस है, इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स सॉल्व. मेरे से पहले अगर आप अपने से सॉल्व कर पाते हैं तो यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ ऑल्सो, नो इश्यूज. बट इफ यू सॉल्व then explain me or just write in the comment
Okay, so let's solve here. 5 number an, same formula. I can write an is equal to an a plus n minus 1, then d, an is equal to, we need to find an, so I'm leaving here, and then I'm putting value for a, that is given 3.5, and the value of n is 105, negative 1, and d, value of d is 0. So very easy, right? If anything is going to multiply with 0, that will come 0. So I'm not going to calculate this. I can put this one as 0 directly. So 3.5 यहाँ रख रहे हैं और इसको मैं just 0 करता हूँ, तो I will be having here 3.5. तो यहाँ जो है वो 3.5 हो गया. 0 जो है वो कॉमन डिफरेंस है. इसका मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 0 जो है वो दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस के रूप में. तो ये यहाँ पर किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो सीधे वी कैन से दैट ऑल टर्म्स आर इक्वल. सभी टर्म्स यहाँ पर इक्वल होंगे. ओके, तो ये तो बहुत इजी था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग को इसमें से कौन सा करेक्ट चॉइस है उसको देखना है कि 13 टर्म ऑफ एपी कौन सा होगा, है ना. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. 30th term of the AP is 10, 7, 4, and so is. We need to choose, we need to find, we need to opt which one is correct. So we'll just apply the formula and we can get the 30th term of the given AP. Let's solve here. This problem is here. ये वाला प्रॉब्लम दे रखा है. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई it. 30 टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो इसको निकालना है. चलिए, जो 30 टर्म ऑफ एपी बोल रहा है, एपी जो है वो निकालना है. 30th टर्म, ओके, ऑफ द एपी. क्या है एपी का? ये है 10, ये है 7, ये है 4 एंड सो इस. ये निकालना है, यही क्वेश्चन दिया है. ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखा है, इसी को निकालना है. तो यहाँ पर हम करते हैं. फर्स्ट टर्म हमारा ए है, तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो हमारा ए एन जो है, ए कितना है हमारा? इनिशियल टर्म 10 है. ठीक है, 30 टर्म निकालना है, तो ए 30 और 30 माइनस 1 29. और ये डिक्रीमेंट कितना हो रहा है? 3 3 3 3 डिक्रीमेंट हो रहा है. तो आराम से डी जो है वो फाइंड हो सकता है. डी 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, next term minus initial term. So here A30 we need to find. So A30 is equal to 10 plus 29 negative 3. I can easily calculate A30 को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आ चुका है
10, then minus, okay, 3 into 9, 9 3 का 27 और 2, 3 दूनी 6 2 8, 87, ये हो गया -77। तो जो ऑप्शन है -77 हमारा आ रहा है। चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। यू कैन सी 97, 77, okay, then -77, -87 is here, -87. So -77 is the correct answer. Okay, third number C equal to -77. Is this correct? Yes, it is correct. So option C is correct. So this is the answer, option C. Okay, yeah. Now we'll move for next question, 11th term of the AP. So 11th term of AP निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। 11th term of the AP, we'll apply the same formula, and here we have this AP -3, -12, 2 and so on is, ठीक है, so and so is. So यहाँ 11th term फाइंड करना है। So we will apply this formula, an is equal to a plus n minus 1 and then d. an क्या है, 11th टर्म, सो ये है a11 और a कितना है यहाँ पर -3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 11th टर्म, तो 10 हो जाएगा, 11 माइनस 1 एंड d। सो d यहाँ पर आपको है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सो ये -1/2 डायरेक्ट निकालते हैं, -1/2 -3, so -3, then 10, then -1/2, minus minus plus, clear? So we have here this value a11 -3 and 3 minus half 2.5, right? 10, 3 2 is 6 divided by 2, so an equal to -3 plus 2 and 5 cancel, it will be 5, and here we have 5, right? So we have -3 प्लस 25, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, 25 में से 3 गया, डेट इज 22, सो 22 आ रहा है इसका आंसर, राइट। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विच वन इज गिवन हियर इन द ऑप्शन, कैन सी दिस क्वेश्चन 28, 22, -38 and -48/2, so this is option B, 22 is correct one. So answer is, this is your answer is B, and this one is correct. Okay, so this is okay. We need to find the missing term in the AP in the next question, so we'll do that. Here you can see, here's you have this question, let's do it. We have first question, you need to find the missing term, so 2, then this, okay, empty box. So what should be here? So we have this one term minus this term will be equal to this term minus will be this term. Suppose we know that we have terms, suppose a1, a2 and a3 and a4. So these all should be, if all are in AP,
are in an AP. So we can say that A2 minus A1, okay, this D should be equal to common difference equal to A2 minus A1. Or very fantastic question to know how to calculate common difference. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये A2 माइनस A1 and that is equal to A3 minus A2 and that should be equal to A4 minus A3. If it will be up to n terms, so we can easily say that an minus 1 previous term. So based on this concept we can easily find out what is the missing term here. कौन सा missing term होगा we can easily find out. Let's do it here. Suppose this is x, so we can say that x minus 2 will be equal to 26 minus x. So here x plus x and then 26 plus 2, we have here 28. So 2x is equal to we have 28, so x equal to we have 14. So 14 is the correct option for here, so we will put here 14 and this is the solution. You can easily say that here 12 incremented so that it become 14 and 14 is incremented by 12, so we will have 26. So it is correct. Okay, and we'll have one more question. Rest we'll do the next day. So here the second question. सब लोग जो आ रहे हैं थोड़ा है ना इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. Those who are coming, yeah, please solve this question. Yes, suppose this is x and this is y. So I have suppose this is x and this is y. I can write here x and I can write here y. So this will be, what is the value of x and y? यहाँ पर 13 minus x, 13 minus x will be equal to y minus 13. So this value will be negative x negative y is equal to negative 13 and negative 13. So it is negative x plus y is equal to minus 26. Minus cancel, so x plus y equal to 26. And now I can have this also. Okay, what this minus this I can move from here, that is y minus 13, that should be equal to 3 minus y. Y minus 13, that is equal to 3 minus y. So we have here y plus y, because this y will come on the left side, its sign will transpose from negative to positive, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और 3 प्लस 13 हो गया. ठीक है, तो ये हो गया y प्लस वाई, तो y प्लस वाई इज कमिंग 2y and 13 plus 3 is coming 16. So y equal to 16 by 2 is 8. 16 by 2 is 8. So I'm just substituting this value of y in this equation. Suppose this is equation 1, so I'm putting here x plus 8 equal to 26. So x is equal to 26 negative 8. So x equal to 18. Okay, x equal to 18. So we have x equal to 18 and y is equal to 8. So I can say that here we have 18, then 13 is already there. We need to find that y. So y is here 8 and then 3. So this is the solution of this problem. If you have a further doubt, any question you want to ask, you can ask me. Okay, so this is at Olympiad Learning. Olympiad Learning. Okay, and I have solved very lot of question related to your exponent. You can go through and check it out in the playlist. Okay, many questions are there in the long form of video and many are there in the shorts. So if you have
if you have a time, you can go for long video. If you don't have time, maybe okay, you can just opt for shorts. So these are there in a number of ways. You can go and just check it out. Okay, and let me know what is the correct time for you, so that on that time I can just streamline my this arithmetic progression to you. And if you have a further any doubt, please write in the comment, like, share, and subscribe my channel, so that many viewers can get more and more benefits to learn arithmetic progression. So thank you. We'll meet in the next time. Thank you so much for being with me. Be happy, stay safe. Thank you. Bye bye.